Hello children, good morning. So children, I hope you all are fit and fine. Now in our today's class, we will start with session number 8. Session number 8 is Internet Security. So for this, here our class begin. So children, in session number 7, we discuss about in our previous class online transaction. Online transaction, that online reservation. Online reservation, that it is convenient, time saving process and we got maximum discount, no middleman is there, and easy we can do refund cancellation process is easy. So these are the things we covered in our previous class. Now our today's task is this internet security. Children, day by day we are using internet and this use of internet is increased day by day. With this, the security is also one major challenge. Okay, nowadays these crimes related to this internet, they are also increased day by day. So our today's task is this internet security, that what are the major issues and how we can protect our system from these issues. So in today's class we will discuss about these terms. First is internet. What is actually internet? Internet is a network of networks. And in this huge amount of network, we are sharing the data with the help of this internet. So when we are transferring the data, so this security is a major issue, that our data will move safely there. And nowadays, with this computer security, our network security, browser security, these are the major issue. Okay? So first we will learn about these computer ethics, these set of rules that guides our behavior. So these are ethics. So first we will discuss about those terms, ठीक है, जो आप कह सकते हैं, that we can say these are the crimes in terms of computer. So first term is plagiarism. What is actually plagiarism? Children, in general term, I can give you one example. Suppose your friend is giving you his notebook for doing work. ठीक है, and you are very smart, you have to deposit your notebooks and you are not having time. What you are doing there, you are placing your name slip there. ठीक है, and in this you are representing someone else's work with your name. This one is crime. Or in term of computer we can say this term is known as plagiarism. Means delivering, or we can say displaying someone another ideas, thought, or we are using someone else idea, thought without the knowledge or permission of that user. So this term is plagiarism. If that person he is registered any case against you, तो वो किस उसमें एक्ट में होगा, that IT Act 2000. And in this, if you are using his information without his knowledge, ठीक है, for example you want to create your own website, and that website, what you are doing, you are not having proper knowledge on that topic. What you are doing, you are taking it, copying the data from some else site, और आपने जो सब copy paste करके you are creating your own website and you are publishing it on internet. ठीक है, तो वो companies हैं, they can do, और अगर वो चाहती हैं तो they can place case on you. And वो जो केस होगा वो किस उसमें रजिस्टर्ड होगा, that one is coming in the category of cyber crime. And cyber crimes होते हैं, they are registered under IT Act 2000, और इसमें either one fine is there, ठीक है, और आपके ऊपर जेल भी हो सकता है. तो फर्स्ट टर्म इज प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म होता है that you are using someone else ideas or thoughts without the knowledge of that user, without the permission of that user. It means you are doing this crime. Second is intellectual property right. Intellectual property right क्या होता है children? Property right. Property you all are having. Suppose that land is there, and for land is a physical one. तो land के लिए क्या है? You are having papers, and that paper represent that this land is yours. Similarly, you are having some ideas and thoughts, and someone is stealing your ideas and thoughts. ठीक है, अगर आपने वो register करवा रखे हैं, so this one is intellectual property right. What is there? For example, children, right now one dispute is there between India and America. The dispute is on turmeric. You have seen that turmeric in India we are using it from previous times. ठीक है, आयुर्वेदा में we are using there. लेकिन जो इसका पेटेंट है डेट वन इज विद अमेरिका. अमेरिका ने इसको रजिस्टर करवाया है. अमेरिका सेड कि वी कैन यूज इट इन मेडिकल साइंस.
ठीक है, तो सेम थिंग इज देयर दैट अमेरिका ने इसको रजिस्टर करवा दिया, इंडिया सेड कि नहीं ये तो हमारा है, हमने इसको डिस्कवर किया, हम इसको बहुत प्रीवियस टाइम से आयुर्वेद में यूज़ कर रहे हैं, बट अमेरिका ने उसको अपने नेम पे रजिस्टर करवाया है, इसलिए वो पेटेंट है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। एंड दिस टर्म इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मोस्टली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वी आर यूजिंग इट इन इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ठीक है। सो सेम थिंग इज देयर दैट इन यू हैव सीन ना दैट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी है ऐसे ही, ऑक्सीजन इज रजिस्टर्ड विद प्रिस्टले, ठीक है। तो सेम थिंग इज देयर विद ऑक्सीजन ऑल्सो। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है कि अगर आपने कुछ डिस्कवरी की है, कोई आपका इन्वेंशन है, कोई आपका थॉट है, अगर आपको उसको अपने नेम पे आपने डिस्कवर उसको रजिस्टर करवा लिया, इफ़ यू आर टेकिंग पेटेंट ऑन दैट वन, सो दैट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर कोई आपकी परमिशन के बिना इफ समवन एल्स इज यूजिंग योर आइडिया, योर थॉट, योर डिस्कवरी, या कल को कोई बोल दे कि भाई मैंने ऑक्सीजन मैंने डिस्कवर किया है, ठीक है, सो मिस्टर पिस्टले ही विल परस्यू दे इन यू इन द कोर्ट, तो वहाँ पे आपके ऊपर वो केस हो सकता है, एंड दैट केस इज रजिस्टर्ड अंडर आईटी एक्ट 2000। सो दिस वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि आपका जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी आइडियाज हैं, इफ समवन इलीगल इज यूजिंग दैट वन, ठीक है, अगर आपके नेम पे रजिस्टर्ड है एंड समवन इलीगल इज यूजिंग दैट वन, you can place or register case against him in under IT Act 2000. Next is copyright. Copyright, children, you have seen so many sites on website, you have seen na that this C symbol is here. C represent this copyright, that all the rights are there reserved with you, and suppose if anyone is using your these idea thoughts, your website content, और अगर उसका कॉपीराइट आपके पास है और कि आपका वहाँ से कॉपी कर रहा है कंटेंट, ठीक है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। So this one is also one illegal case, ठीक है, और we can say illegal work. So copyright is also one crime, ठीक है, means this one is the copyright, और अगर कोई आपका कंटेंट यूज कर रहा है तो वो क्राइम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी मीन्स होता है दैट इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। चिल्ड्रन इन मार्केट यू विल चेक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है एंड यू विल गो देयर ना, तो आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर की कॉपीज भी मिल जाती हैं, थोड़ी सी कॉस्ट में कम होती हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग दैम, इफ़ यू आर परचेजिंग दैम, सो दैट वन इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी मीन्स होता है डुप्लीकेसी, ठीक है, यू आर यूजिंग डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर, इट मीन्स यू आर ऑल्सो डूइंग क्राइम, जो उसको सेल कर रहा है दैट पर्सन इज ऑल्सो डूइंग क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम। नेक्स्ट इज हैकिंग। हैकिंग होगा क्या होता है दैट सम पर्सन इज इलीगल गेटिंग एक्सेस टू योर कंप्यूटर एंड स्टीलिंग योर इन्फॉर्मेशन, दैट वन इज ऑल्सो क्राइम, जिसको हम बोलते हैं ना ऑनलाइन स्टीलिंग द इन्फॉर्मेशन, तो विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर, सो दैट टर्म इज नोन एज हैकिंग, एंड हैकिंग इज ऑल्सो वन क्राइम if you found and any person is stealing information from your computer without your knowledge, so you will register that crime, ठीक है, you will register that case against that person, ठीक है, और वो किस केस में रजिस्टर होगा, वो होगा IT Act 2000 के अंदर। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग होता है चिल्ड्रन ऑनलाइन फ्रॉड। Online someone is stealing your card information, your ID and password, and using that information, ठीक है, misusing that information, so that term is known as phishing, ठीक है, this one is also one crime. Spamming क्या होता है that if any sender is sending large amount of we can say junk mail, means wastage mails, और we can say, ठीक है, जो ये इस टाइप के emails होते हैं जो आपके लिए useless हैं, and if person is sending you it in bulk, तो that one is spamming. उसमें क्या होता है that with that they are trying to stealing your information. Suppose you are getting any mail like this, तो आप daily you are getting so many mails there, और आपने उसको ऑन कर लिया and you are clicking on that one, होता है ना sometime on WhatsApp that some links they send, and when you are clicking on that one they will stealing your information from your phone, and with that information they are collecting money, they are taking money from your account, so this term is known as this case is registered under cyber crime, और spamming बोलते हैं ये unwanted mails को। How we can protect our system from these crimes? First is install protective software. Software means that protective software, antivirus, you can install it in your system. The function of antivirus is to protect your system from these virus file, ठीक है, डिटेक्ट करना वायरस को, उसको रिमूव करना, this is the function of antivirus.
So many antivirus are available in the market. Norton, AVG, McAfee, Quick Heal or CRISPR, so many antivirus are there. It is better you will purchase one antivirus और अपने system को protect करना है. Second हमारा क्या है, how we can protect, choose a strong password. पासवर्ड कभी भी किसी मेल आईडी का वी विल नॉट प्लेस लाइक दिस दैट एनीवन कैन इजीली ब्रेक इट. ठीक है, सो चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और आपका पासवर्ड होना चाहिए दैट वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, numbers and special characters so that strong password will not easily cracked by any unauthorized user. How we can protect our system? Third is backup your data on regular basis. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हमें क्या है, अपने डेटा का बैकअप लेना है. सपोज बाय मिस्टेकन फिर भी कोई अगर अनऑथराइज यूजर कोई वायरस सिस्टम में आ जाए, डैमेज कर जाए, सो इन प्लेस ऑफ दिस यू विल टेक द इम्पॉर्टेंट डेटा फाइल्स का बैकअप लेना है. आइदर यू विल ट्रांसफर इट इन द CD हार्ड ड्राइव, कहीं पे उसको सेव करके रखना है. और वी कैन कंट्रोल एसेस आर मशीन. ठीक है, अब सपोज इफ यू आर नॉट यूजिंग योर कंप्यूटर, ठीक है, सो काइंडली लॉग आउट इट प्रॉपरली. और पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप कहीं से भी कहीं अपना अकाउंट आप एक्टिवेट कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर अकाउंट देयर, सो फर्स्ट थिंग इज यू विल लॉग आउट फ्रॉम योर अकाउंट प्रॉपरली. नेक्स्ट इज यूज ईमेल एंड इंटरनेट सेफ्टी. ठीक है, यूज इंटरनेट एंड ईमेल सेफली. And it means कि if you found that online attachment, any unknown user is sending you any email and attachment is there, some links are there, so no need to open that mail, no need to open that attachment, might be that contain virus file. So use email and internet safely. By this you can protect your system, you can protect your information from these unauthorized users. Next is protect sensitive data. Sensitive data, children, you have seen that your password is the sensitive one. ठीक है, so no need to share your password with anyone. Second is if data is sensitive, you will use that encrypted form. Encrypted form, you have seen that on the password. ठीक है, some bullets are there, some stars are there. So in this manner that not anyone can read it. So this one is the sensitive data. You can protect it by encrypting them. Next is use firewall. Children, firewall is the basic way to safeguard your computer from these unauthorized users. ठीक है, firewall क्या होता है? The two things are there. One is antivirus and one is firewall. Antivirus you are placing by from your side for extra protection. Firewall is already there in your system. And the function of firewall is to protect your system from unauthorized users. ठीक है, कोई भी अगर अनऑथराइज यूजर है, अगर इस सपोज इन योर सिस्टम फायरवॉल इज एक्टिवेटेड, तो आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज यूजर है वो एंटर नहीं कर पाएगा. ठीक है, और जो हमारा एंटीवायरस होता है वो भी हमारे सिस्टम को अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपके सिस्टम में अगर कोई भी वायरस फाइल एंटर होती है तो वो उससे भी प्रोटेक्ट करता है, स्कैन करता है उसको. नेक्स्ट इज स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस बिफोर यूज. इट मीन्स दैट if you are using pen drive, CD, DVD in your system, your first duty is you will scan it and then you will use it. If you are using it before scanning, then might be possible that contain any virus file, and with this your system will damage. And sometime what happens, so many softwares are there, ठीक है, that they will enter in your system without your knowledge and they will collect your information from there, your ID, password, and they will provide it to their server, and with this manner they are collecting information from your system, your ID, password. So scan all portable storage devices before use. Next is do not use pirated software. Pirated means that copied software. Sometime what happen, because we are getting it in cheaper rate now, we people prefer this, but this one is illegal to use pirated software, and might be possible that it contain virus file. So do not use pirated software. Always go for genuine software and download it from official website. By in this manner you can protect your system from these cyber crimes. Next is secure transaction. Children, when you are doing any transaction, online payment if you are doing, then always remember in your web browser this HTTPS is
must be there. This S remain that this one is a secure connection, and अगर वहाँ पे HTTP लिखा हुआ है तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करना है, ठीक है. फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट HTTPS होना चाहिए. एस ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट कि वो जो कनेक्शन हुआ है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, दिस वन इज वन सिक्योर कनेक्शन. एंड देन यू विल रिलीज योर ID पासवर्ड, योर वट एवर द कार्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है. सो ऑलवेज यूज सिक्योर ट्रांजेक्शन, ठीक है, सिक्योर मैथड by doing this online transaction. If you found that unsecured connection is there, no need to release your personal details there. Next is clear data stored in the browser. One more method, that if you suppose you are using your ID on any cyber site, ठीक है, on cyber cafe, so once your work is completed, your first task is log out from your account properly. Second task is clean all the cookies. What is cookies? Children, if you are using any site on the internet, ठीक है, आपका जो इंटरनेट कौन सा साइट यूज किया है, each and every information is stored in the history. Your ID and password is stored in the cookies. So if you are opening any site, so on any this cyber cafe, your task is after this first log out your account properly, and then go there in the tool section and remove this history, clean cookies, and in this manner you can protect your system from these type of cyber crime. So children, what we covered till now we covered about these computer ethics, what are the problems we are facing these days, ठीक है. So what are the problems? First is plagiarism. Plagiarism क्या होता है कि आपने, if you are using someone else information, someone else work without his or knowledge, so this one is crime, ठीक है. आपको करना क्या है, फर्स्ट either you will take permission from there, otherwise they can place register case against you, और वो साइबर एक्ट में काउंट होगा. नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, दैट इफ यू आर हैविंग एनी थॉट, आपने कुछ डिस्कवरी की है, कुछ इन्वेंशन किया है, सम लिटरेरी वर्क इज देयर, सम आर्टिस्टिक वर्क इज देयर, तो आपने अगर कुछ ऐसा भी किया है तो आपको क्या है, पहले उसको अपने नेम से रजिस्टर करवाना पड़ेगा. दैट यू हैव सीन ना, सो मेनी सॉन्ग्स आर देयर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सॉन्ग उसका है, बिकॉज दैट पर्सन दैट वन इज रजिस्टर्ड ऑन हिज नेम, ठीक है. तो दिस वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अगर कुछ ऐसी डिस्कवरी इन्वेंशन है तो आपको उसको रजिस्टर करवाना है. और सपोज इफ एनी else person is using that information, if it is already registered on your name, so that person is doing crime. Next is copyright. Copyright, if on any website you see that this C symbol is there, it means that all the rights are reserved with that company. If you are stealing that information from that website, means you are doing crime there. Software piracy. Piracy means duplicacy. अगर आप कोई duplicate software use कर रहे हो and someone is selling it, तो you both are doing crime there. Hacking means कि illegally you are trying to access in the computer, ठीक है, of someone else, and you are storing that information, you are using that information, that term is known as hacking. Phishing क्या होता है, that on internet you are doing fraud. So many internet frauds are there, they are taking your ID password and using that, so this term is known as phishing. Spamming होता है that large amount of bulk mails, we can say that junk mails, they are coming in your computer, so this term is known as spamming. Spam होता है unwanted mails. Next is how we can protect our system from these problem. Install antivirus software. Second is that use strong password. बैकअप योर डेटा रेगुलर बेसिस पे लेना है. कंट्रोल करना है अपने सिस्टम को, मशीन को, दैट स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस. लॉग आउट योर अकाउंट प्रॉपरली. यूज ईमेल एंड इंटरनेट सेफली, ठीक है. इफ यू फाउंड दैट एनी अटैचमेंट फ्रॉम अननोन यूजर, नो नीड टू ओपन दैट ईमेल. प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा by using some encryption form. Use firewall, it will protect your system from unauthorized users. And scan all the portable storage devices before use, like CD, DVD, pen drive. And do not use pirated software. If you are purchasing any copied software, it will be, ठीक है, it will crime for both of you, जो purchase कर रहा है वो भी, and the person who is selling that pirated software, that one is also doing crime.
सिक्योर ट्रांजेक्शन, इफ यू आर डूइंग पेमेंट तो वहां पे हमेशा चेक क्या करना है, डेट HTTPS is there. If HTTP only written, that means that connection is not secured. And if unsecure connection is there, no need to release your information, your ID, password, your personal detail on that network. Clear data stored in the browser. If you are using this your these website, ठीक है, this site, your account on these public computers, so always first thing is log out from your account properly, and whatever data is stored in the browser in cookies, clean it from there. So children, these are the points you must remember when you are doing work somewhere, ठीक है, on these computers. Next is how we can clean this personal data from a browser. So this thing we will discuss in our next class. Till now, do revision. Thank you. And if you found any problem, you will ask this to me. And thank you class for listening me, for giving me your precious time. Thank you.